Hello everyone. I hope you all are good and you all are practicing problems. Let us for now get at this question and let us first read the question. A particle of mass m is released from point A on a smooth fixed circular track as shown in the figure. So we have a circular smooth track. It looks like this and point A कहाँ है तुम्हारा एक horizontal diameter बनाओ and at the end of one of this horizontal diameter there is point A and actually what we are doing we are releasing the particle from point A. So देखो पार्टिकल तुम्हारा कहाँ होगा यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट दिस जैसे क्वेश्चन को समझना मीनिंग यू हैव हाफ सॉल्व द क्वेश्चन जैसे ये ट्रैक कुछ ऐसा है तो पार्टिकल कहीं अंदर की तरफ ऐसा होगा डन है यू डोंट नीड टू थिंक अबाउट लाइक पार्टिकल इज समवेयर हियर नो नॉट आउटवर्डली आई मीन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस सर्कुलर ट्रैक सो ट्रैक के ऊपर ही तुम्हारा पार्टिकल होगा ऊपर कहने का मतलब दिस इज द ट्रैक राइट so upon this is the particle. So particle is here. Done it? So not like this. Okay. So this is this. Now we have to plot the variation of normal reaction on the particle with theta, which is the angular displacement from initial position. Okay. So actually, as a function of theta, theta is what? Theta is angle getting traveled or getting traversed by this particle विद हॉरिजेंटल ठीक है सो यहाँ पे देखो ये हॉरिजेंटल लाइन है इससे ये कितना एंगल बना रहा है एट एनी टाइम टी सो लेट्स से एट एनी टाइम टी पार्टिकल इज हियर विद द हॉरिजेंटल एंगल गेटिंग मेड इज दिस थीटा सो I mean we have to plot normal reaction as a function of this theta done it? So first of all we need to I mean analyze the motion को रीड करना है सही से अब देखो यहाँ पे क्या होगा द मोमेंट यू विल रिलीज इट बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन सॉरी बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ इट विल स्लाइड डाउन द ट्रैक डन है एंड while it is sliding down the track it is going in a circular trajectory डन है सो सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है क्लियर है अब देखो सपोज कर लो हमारा पार्टिकल किसी भी टाइम पे लेट्स से इट इज हियर done it and with the horizontal it is making an angle of theta so what are the forces acting on it आप इस पे forces draw कर लो so mg will act downward done it and normal reaction always acts perpendicular to the uh, I mean perpendicular to the surface on which it is मूविंग और रेस्टिंग डन है सो यहाँ पे सरफेस ये है इस सरफेस पे इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर क्या होगा टुवर्ड्स द सेंटर सो दिस इज द लाइन एंड नॉर्मल रिएक्शन विल एक्ट अलोंग दिस लाइन so we have two forces. Friction is not there, right? So we don't need to worry about it. We have two forces, normal reaction and mg. Now how to break the forces? So आपको ये देखना होगा कि इसका मोशन किधर किधर हो रहा है देखो ये सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री में जा रहा है तो वी विल बी इंटरेस्टेड इन फोर्स कैलकुलेशन टुवर्ड्स द सेंटर सो वन line along which we are interested is this line and another it is moving along the surface so another line will be this I mean, along the tangent. Then because along the tangent, it will have velocity at this point of time. Then so let's say this is x-axis, this is y-axis. So whatever force is not along x and y, break it simply. So n is along the x-axis, we don't need to break it. mg को आप break कर लो. So what will be, this angle is theta. So this angle will be theta क्योंकि देखो theta is angle between horizontal and radius vector and this is what this is perpendicular to horizontal and this is perpendicular to radius vector done hai? So we know that if angle between two line is theta angle between their perpendiculars will also be the same that is theta so here this is theta अब आप mg को break कर लो so this is your mg cos theta and here it will be how much here it will be mg sin theta done it? So because of mg cos theta thing here it is coming down done it? At every point mg cos theta acting along the surface will basically bring it down bring it along the track done it? So basically mg cos theta will be responsible for the tangential acceleration of the block okay and what about this mg sin theta so let us write net force acting towards the center so what is the net force acting towards the center n minus mg sin theta this is the net force towards the center and this will be equal to mv square by r ठीक है सो दिस इज दिस अब देखो यहाँ से n का वैल्यू क्या दिख रहा है हमें mg sin theta प्लस mv स्क्वायर बाई r सो n एज अ फंक्शन ऑफ थीटा हमें निकालना है यहाँ पे v भी वेरिएबल है डन है सो वी नीड टू आई मीन कन्वर्ट इट इनटू समथिंग
लुकिंग लाइक थीटा थिंग, राइट? सो हाउ वी कैन डू दैट? अभी अभी देखो हमने देखा जो हमारा ट्रेजेक्ट्री है दैट इज स्मूथ. सो स्मूथ कहने का मतलब फ्रिक्शन इज नॉट देयर एंड ओनली फोर्स इन्वॉल्व इज व्हाट is mg which is doing the work. Normal reaction always acting perpendicular to the velocity, it is not doing any work, right? So mg is the only factor doing work which is a conservative force, done it. And when conservative force is there doing work, we can conserve mechanical energy, that is sum of potential plus kinetic energy has to be constant. Okay, so initially our particle was where? Here. Let's say this line I am treating at height equal to 0. So here potential energy is 0 and we are releasing it from rest. So initial kinetic energy is also 0. So this is 0, this is 0 initially. So initial mechanical energy is 0. What will be the final mechanical energy at any position which is uh, I mean radius vector of which is making an angle theta with the horizontal, or you can say position vector of which is making an angle theta with the horizontal. Okay, सो यहाँ से अगर आप इस पॉइंट पे निकालते हो तो इस पॉइंट पे लेट्स से इट्स वेलोसिटी इज v, सो काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू हाउ मच? इट विल बी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर. एंड व्हाट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी? सो इसको हमने जीरो हाइट माना है. सो हियर potential energy is zero. If we go up, potential energy will increase. If we go down, potential energy will decrease. So at this point potential energy has to be negative. अब देख लो कितना हाइट वो डाउन है. सो दिस इज द हाइट. डन है. ये हाइट का वैल्यू आप निकाल लो. दिस विल बी हाउ मच? सो दिस इज योर आर. ठीक है. एंड दिस इज योर एक्स एंड दिस इज थीटा. दिस विल बी थीटा. सो एक्स बाई आर इज हाउ मच? एक्स बाई आर इज इक्वल टू this is sine theta, right? So x is equal to how much? X is equal to r sine theta. So potential energy will be how much? Minus mg r sine theta plus this is equal to final mechanical energy. So let me mark it. I mean final mechanical energy is this one. And initial mechanical energy is 0. So both has to be equal. So आप यहाँ पे क्या करोगे? Half mv square minus mgr sine theta will be equal to 0. And from here we can get mv square by r. So mv square by r, r ये वाला टर्म है, इसको मैं इधर ले आऊंगी. ठीक है, लेकर आ सकते हैं. डन है. So what we can write here, I mean this is, I mean mv square by r, this is 2 mg sine theta. Done it. So from here we are getting this one. नाउ एम वी स्क्वायर बाय आर की जगह आप 2mg साइन थीटा यहाँ पे पुट कर दो. नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू क्या मिल रहा है? दैट इज योर 3mg साइन थीटा. सो ब्लाइंडली अगर आप ग्राफ बनाओगे तो आप कुछ साइन थीटा का ग्राफ बना दोगे ऐसे. ठीक है, जहाँ पे मैक्सिमा कितना है? मैक्सिमा इज योर 3mg. बट दिस वोंट बी करेक्ट, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ये वाला जो ट्रेजेक्ट्री है, इस ट्रेजेक्ट्री से आई मीन हियर यू आर रिलीजिंग इट फ्रॉम हाइट इक्वल टू 0. डन है. एंड एज इट विल गो डाउन इट विल गेन एनर्जी. सो जब ये बॉटम की तरफ आएगा, इट मीन्स व्हाट? एट दिस पोजिशन it has gained kinetic energy. Why it has gained kinetic energy? Because it has fallen through height of r. Done it. So it has fallen through height of r, because of which it is having certain value of energy at point O, let's say. And then because of this energy, it will be able to only go up to the height r. क्योंकि देखो ये energy at this point it has gained by falling through height r. So कितने height तक वो climb कर सकता है because of this energy? Again r from the energy conservation. So यहाँ से यहाँ गिरा तो ये maximum यहाँ तक जाएगा, इससे ऊपर ये जाएगा नहीं. ठीक है. So again वो repeat होगा. Done है. So if you have to plot the graph of n equal to mg sine theta, theta is this angle, right? So up to this point we will go. After that it will keep on repeating. So ये वाला जो portion है ना, this one you need to remove. So यहाँ से यहाँ तक का again यहाँ से यहाँ जाएगा ये, तो again ये चीजें repeat होगी. ठीक है. So कुछ ऐसा जाएगा. Done है. So I hope it is clear. If just to solve this question, you needed to pay attention to every small detail. Question difficult नहीं है, question बहुत ही simple है, I must say. Only thing is कि सारी चीज़ों को carefully लिखना था and then you needed to plot it again carefully. क्योंकि देखो क्या होता है ना, कभी-कभी हमें मिल गया, equation मिल गया, we blindly mark the option. अगर ऐसा दिखता तो हमें दिखता चलो sin थीटा का ग्राफ तो ऐसा होता है, तो n वर्सेस थीटा ऐसा होगा. लेकिन आपको ये भी देखना है कि ये कंप्लीट सर्कल में नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ से वो गिरा है,
तो गिरने की वजह से it can only rise up to this height only. Beyond it cannot go, right? So yeah, the correct graph will be this one. I hope it is clear, but if you have any doubt anywhere in this question, you can always let me know in the comment section. Thank you. Take care of yourself. Bye bye.